Hello, we are going to study the prelims syllabus now. Like the prelims, mains, and interview syllabus. We are going to read it and learn it. What is the prelims syllabus? Let's go to the syllabus. This is the syllabus of prelims. So, current events of national and international importance. Current events of national and international importance. For example, the Israel and Hamas conflict which is going on. That is one of such international and national importance events. History of India and Indian national movement. Indian and world geography. So break it down. First, it is current affairs. Second, it is history of India and Indian national movement. It's a very important landmark in Indian history. Indian and world geography. Physical, social, economic geography of India and the world. Indian polity and governance. Constitution, political system, Panchayati Raj, public policy, rights and issues. So this is polity and governance. Indian and world geography. Physical, social, economic geography of India and the world. Economic and social development, sustainable development, poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives, etc. General issues on environmental ecology, biodiversity, climate change that do not require subject specialization. So this is this. So we see current affairs, history, geography, polity and governance, economic and social development, 5, and then we have environment and ecology, 6, and there is also science and tech. It is not like exclusively mentioned, but it is there in the syllabus. Here it is general science. This is science and tech basically. So now let's see how can we write it. We write it without seeing it so that it's etched in our minds. Okay, let's start. So how do we do that? First of all, just try to remember what were the topics. The first topic was current affairs. Second topic was history. Third topic was geography. Fourth topic was polity and governance. Fifth topic was, what was the fifth topic? It was economic and social development. The sixth topic is environment and ecology. Seventh topic is general science, which is science and tech as we call it. Okay, so you must remember this, that these are the 7 areas from which the questions are coming, and whenever you are studying a topic, you should categorize in your mind that this is a history question or a geography question or polity or governance question, and also you have to make a list of the topics on the basis of this. Now let's see what is exactly there. What was the current affairs? The current, or usually the contemporary events of national and international importance. National and international importance. This is
Yes. Then history of India and Indian national movement. This was there. What was there in geography? What was there in the geography? Indian and world geography, physical, social, economic geography of India and the world. Indian and world geography. Social geography. Physical, social, economic geography. Physical, social, economic. Of India and world, it's the same thing. Okay, India and the world, Indian and world geography. So there's, when we are studying, we should look to the things that we can eliminate. जैसे India and world यहाँ पे 2 बार लिखा है. We have to write this thing once in our notes or in our head, so that we don't have to remember a lot of information. Then moving on to polity and governance, we go to the Indian polity and governance. What happens is constitution, political system, panchayati raj, public policy, rights issues, etc. So इंडियन पॉलिटी का जैसे ही नाम है, हमको पता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, like you should be able to remember this. Then political system. इंडिया में political system कैसा है? What is the political system? पंचायती राज पंचायती राज, public policy, rights issues. What is India's public policy? Political system, panchayati raj, public policies, rights and issues. Indian constitution. So we see that there are 5 real points. 1 is Indian constitution, 2 is political system, 3 is panchayati raj, 4th, because panchayati raj is exclusively mentioned, it should be understood from here that it is very important. Then there is public policy also. So public policy is the 4th point, and rights and issues. So rights is a very important part. When the rights came into our lives of humans, rights were not there right from the inception of humankind, but when it happened, it is also known as the Magna Carta of the legal world. That's what it is called. Then we have economic and social development. So what we have in economic development, very important part is sustainable development goals. So what we are looking forward, not only as a country but as world, is sustainable development. That is the goal. Sustainable development is the first point. Sustainable development. Then poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives, etc. Poverty, inclusion, demographics, social sector initiatives, etc. Poverty is a very determining factor of not only India but world, but in Indian context it is very important. इस पे इस बार मेंस में भी क्वेश्चन पूछा था. Inclusion, we have inclusion, all sorts of inclusion, financial inclusion, social inclusion. Okay, so the steps which are taken for financial, social, this is a very important, inclusive growth as we call it.
That is this is also there in the mains topics. Demography is extremely essential. Social sector initiatives. Social sector initiatives. These are social sector initiatives. So this was all about economic, and we also have 5 points here, as you can see. 1, 2, 3, 4, 5. The mnemonic you can form from here is S, P, I, D and S again. So SPI DS square. ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको. SP is Superintendent of Police. I became the SP, and so I got a deputy SP's position before that. So that is how you can remember is SPIDS square. S for social sustainable development, P for poverty, I for inclusion, D for demography, S for social sector initiatives. So this was it. Then we come to the environment and ecology. This is very important. Environmental ecology में से काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो जनरल इश्यूज ऑन इन्वायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, ये आज के कॉन्टेक्स्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है. तो इसके बारे में हमको डिटेल नॉलेज भी होनी चाहिए. General issues on environmental ecology, biodiversity and climate change that do not require subject specialization. It is specifically mentioned कि यहाँ पे subject specialization की ज़रूरत नहीं है. So what is it? General issues on environmental ecology. Biodiversity and climate change. Biodiversity and climate change. Biodiversity and climate change that do not require subject specialization. Biodiversity and climate change, and इसके बारे में जनरल इश्यूज़ की नॉलेज होनी चाहिए. That do not require subject specialization. Okay. And then we have general tech, जनरल साइंस. इसमें कुछ नहीं है, जनरल साइंस एंड टेक है. इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं जैसे कि स्पेस टेक्नोलॉजी में क्या एडवांसमेंट्स हुए हैं, और उनके पीछे की जो बेसिक टेक्नोलॉजी है वो हमको मालूम होनी चाहिए, क्योंकि अब हम टेक्नोलॉजी के एरा में रहते हैं. क्वांटम कंप्यूटिंग में क्या प्रोग्रेस हो रही है, या फिर नैनो टेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. सो आई थिंक दैट वाज clear enough. That was all about the prelims syllabus. We can revise it once more. So first of all, you need to, how do you remember it in your mind, like so that you don't forget it? Current affairs, we already know that current affairs are part: history, geography, polity, governance, economic, social development, environment, ecology and general tech. Then we have current or contemporary issues of national and international importance, history of India एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट. ओके, इंडिया की हिस्ट्री में हम ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं. स्पेशली प्रीलिम्स के पेपर के अंदर हिस्ट्री के क्वेश्चन सिर्फ इंडिया से आते हैं, और इसमें आप देखो कि आर्ट एंड कल्चर अलग से मेंशन नहीं है. तो ये जो हिस्ट्री ऑफ इंडिया है, इसके अंदर ये चीज़ जो है ये आ जाती है. आपके एंशंट, मेडिवल, आर्ट एंड कल्चर, ये सब इसके अंदर ही आता है हिस्ट्री ऑफ इंडिया के अंदर. और जो मॉडर्न हिस्ट्री है दैट कम्स इन इसमें, क्योंकि अलग से दिया हुआ है, तो आप नोटिस करना मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चन अलग से और ज़्यादा क्वांटिटी में पूछे जाते हैं. इसके अलावा ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी. PSC का मतलब है फिज़िकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी. फिज़िकल ज्योग्राफी हमें मालूम है हमारे अर्थ की शेप कैसी है, कहाँ क्या होता है. सोशल ज्योग्राफी होती है कि
जोग्राफी और सोसाइटी कैसे आपस में इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज़ सोशल जोग्राफी. इकोनॉमी एंड जोग्राफी आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक जोग्राफी. उसके बाद इसमें आएंगे हमारे इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट. इसमें हमने देख लिया SPIDS स्क्वायर, यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स एंड सोशल सेक्टर इनिशिएटिव. सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स का बेसिकली मतलब वेलफेयर स्कीम्स, जो सरकार की योजनाएं चलती हैं, वो इसके अंदर आता है. इसके बाद पॉलिटी और गवर्नेंस में हमें पता है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से पूरा देश चल रहा है. इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम है, इसमें आर्टिकल्स पूछे जाएंगे, प्रोविजंस पूछे जाएंगे, क्या है क्या नहीं है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. कॉन्स्टिट्यूशन की फ़िलॉसफी के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. पॉलिटिकल सिस्टम क्या है इंडिया में, उसके बारे में बहुत पॉलिटिक्स के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन जो पॉलिटी है यानी कि जो राजनीतिक व्यवस्था है उसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. कि जैसे एंटी डिफेक्शन लॉ है, इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम. देन देर इज़ पंचायती राज. पंचायती राज एक्सक्लूसिवली मेंशन्ड है. डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के ऊपर आपको भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे. देन देर इज़ पब्लिक पॉलिसी, यानी कि जो लेजिस्लेशंस हैं जैसे DPSP है, दैट इज़ बेसिकली एन इंडिकेशन ऑफ व्हाट अ पब्लिक पॉलिसी इज़. हमारे देश में किन प्रिंसिपल्स के ऊपर देश चलाया जा रहा है. राइट्स एंड इश्यूज़, कौन कौन से राइट्स हैं और क्या इश्यूज़ आ रहे हैं उसमें, ये है. तो आपको अगर इसको याद रखना तो आप इसको IPPPR, तो ऐसे तो याद नहीं रहेगा ये. C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे याद रख लीजिए. P फॉर पॉलिटिकल सिस्टम, और P फॉर पंचायत, P फॉर पब्लिक पॉलिसी, P फॉर पॉलिटी, R फॉर राइट्स, I फॉर इश्यूज़. इश्यूज़ इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इश्यूज़ का मतलब होता है, देखो हम बहुत बार इन 3 टर्म्स में कंफ्यूज हो जाते हैं. इश्यूज़, प्रॉब्लम्स, चैलेंजेस. अब क्या ये सारी चीज़ें एक ही है? इश्यूज़ का मतलब होता है कि मुद्दे क्या हैं, ठीक है, मुद्दे क्या चल रहे हैं आपके. प्रॉब्लम्स का मतलब ये है कि आप चैलेंजेस होते हैं चुनौतियाँ, ठीक. चुनौतियाँ क्या है, हमको आगे बढ़ना है तो हमारे बीच में एक ऑब्स्टेकल खड़ी है, उसको पार करना इज़ अ चुनौती. और प्रॉब्लम्स जो हैं वो ऑब्स्टेकल्स है. जैसे ये हम रास्ते पे जा रहे हैं, यहाँ पे ये जो चीज़ पड़ी है ये प्रॉब्लम है, इसको पार करना एक चुनौती है. और ये जो पूरा प्रोसेस है इस रास्ते को ट्रैवल करना, ये एक मुद्दा है. सो दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन राइट, इश्यूज़ एंड चैलेंजेस. That this is interchangeably used. Biodiversity and climate change, and general issues of environmental ecology, and then science and tech. So that was it for this for the prelims syllabus. I hope it is clear. Thank you so much.